Kunal sir, sorry to disturb you. Okay, can you guys check now if my audio is now better? Yes, it's better. It's better right now. Yes, sir. Yes, sir. Fine. Yeah. Fine, that's good. Okay, so I will assume everyone here has a Salesforce developer or created as of now. Anyone who has joined today for the first time and does not know how to create a Salesforce org या पहले session में नहीं थे, they have missed it. Please raise your hand. See, it is crucial to address these things right now. Okay, fine. Then I'll assume everyone has an org. That is good. So for now, what you will do is from today, when I am performing any activities here, right? So all this will be recorded, right? The whole session will be recorded. All these activities आपको खुद भी irrespective of जो भी मैं आपको exercise दे रहा हूँ. Let's say I create a custom object. Then मैं आपको exercise देता हूँ, create another custom object. So you also have to make sure all the steps I follow in the class, you go through those, try to perform those yourself. Repetition से ही आपको clear होगा चीज, right? So please make sure you perform that. Anyways, so let's begin for today, and let me share my screen. And today what we will do is we will be going through the basically UI journey of Salesforce. कि Salesforce में किस चीज को क्या कहते हैं, कहाँ पे आपको सब चीजों का एक्सेस मिलेगा, and what are the main things you should be knowing as of now. Is that clear to everyone? Fine. Yes, sir. Let me know once my screen is visible, guys. Someone is unmuted, not sure. Is my screen visible? Yes or no, guys? Yes. Yes. Yes, You visible. guys have to answer. Everyone Yes. cannot wait for someone else to answer. Please, please. Anyone who knows the answer, you guys answer. Okay. सब अगर चुपचाप बैठे रहेंगे कोई और बोलेगा, then I won't get an answer. Okay. Fine. So right now, last time जो मैंने आपको दिखाया था, right? So this is your normal जो landing page, जो default out of the box landing page होता है of a Salesforce environment, right? Now this by itself is not the core Salesforce app. Okay. Salesforce के अंदर the first thing you have to know is this thing, which is the app launcher, right? जो भी आप फंक्शनैलिटी बनाते हो, जो भी आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो, कुछ भी आप प्रोजेक्ट के लिए बनाते हो, आइडियली इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एन ऐप, राइट? कि इस ऐप के अंदर आपको वो चीज बनानी है ना, जो भी फंक्शनैलिटी आपको चाहिए बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप बनाएंगे. कहीं पे आपके पास मल्टीपल ऐप होगा, कहीं पे एक ही ऐप होगा, राइट? कुछ यहाँ पे एप्स है जो स्टैंडर्ड सेल्सफोर्स के ऐप है, जैसे यहाँ पे आपको जो जो दिख रहा है, ऑल ऑफ दीज आर स्टैंडर्ड सेल्सफोर्स एप्स, राइट? बट एवरीथिंग यू बिल्ड इज विद इन एन ऐप. तो जब आप लॉग इन कर रहे हो, ये जो होम पेज खुलता है, दिस इज बाय इटसेल्फ आल्सो एन ऐप. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऐप? द नेम ऑफ दिस ऐप इज सेल्स. दिस इज द सेल्सफोर्स सेल्स क्लाउड ऐप जो डिफॉल्ट. यहीं पे ऐप लॉन्चर के अंदर से इफ यू सी, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर एप्स आल्सो. So when you are working within Salesforce, in most cases what you will be working is either आप ये out of the box Salesforce के apps यूज कर रहे होंगे, या फिर आप कोई कस्टम एप्लीकेशन बनाएंगे जो यहाँ पे आप ऐड करेंगे, जो यूजर्स यूज करेंगे, राइट? सो योर वर्क इज विद इन दीज एप्स. ओके. नाउ विद इन ईच ऑफ दिस ऐप आप जो यूआई है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन वट एवर इज योर रिक्वायरमेंट. तो ये सब चीजें हम बाद में कवर करेंगे. फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू नो ओके व्हाट इज एन ऐप. अब ये ऐप बनाएंगे कहां से, हम कंट्रोल कैसे कहां से करेंगे, मॉडिफाई कहां से करेंगे? फॉर दैट you see just at the top right there is this gear icon जिस पे क्लिक करने पे आता है सेटअप.
right? So let's go to this setup. This is not an application. ये आपका इन एप्स से अलग है. ये जो है एप्स, ये आप कस्टमर फेसिंग एप्स बना रहे हैं. दिस इज योर बैकएंड. यहाँ सेटअप के अंदर से ही आपको जो कॉन्फ़िगरेशन करना है, जो एडमिन वाले काम करने हैं, डेवलपर वाले काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ दोस थिंग्स यू विल बी डूइंग फ्रॉम हियर. ओके, सो ये है आपका सेल्सफोर्स का लाइटनिंग का सेटअप. यहाँ पे आप ये सब चीजें कॉन्फ़िगरेशन, ऑटोमेशन, यूजर मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, ये जो जो चीजें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है वो सब कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ बैकएंड से कर सकते हैं. सो फॉर नॉर्मल लेमन टर्म्स अगर आप बात करेंगे तो any of those apps is your front end in Salesforce and this setup is the back end of Salesforce, right? Now within this setup, अब यहाँ पे जो हमको configurations जो करना है, there are few key places you need to know. Okay, ये app launcher is always available. तो इसको आप क्लिक करके कभी भी किसी भी ऐप में स्विच कर सकते हैं, right? Then this is your global search. अब ग्लोबल सर्च आप देखेंगे दोनों जगह आपको दिखेगा. There is a global search here also, there is a global search here also. But इसमें एक डिफरेंस है. डिफरेंस कहां पे आ रहा है मैं आपको दिखाता हूं. Let me put it here, right? So I just added my name and if you see, it does not show any results as such. उसको कुछ यहाँ पे डायरेक्ट मिला नहीं यहाँ पे. But the same thing if I write here, right? You see, immediately एक result आ गया and once I click on this, it goes to a specific page. Now the difference between these global search आपको ध्यान रखना पड़ेगा. This search searches within an application. कोई भी चीज जो इस एप्लीकेशन के अंदर नहीं है वो आपको इस एप्लीकेशन के सर्च से नहीं मिल सकती. Which would mean आप जब सर्विस ऐप में जाके कुछ सर्च मार रहे हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि जब आप सेल्स ऐप में उसको सर्च मारेंगे वो वहां पे आपको मिलेगा. ओके, सो दिस सर्च इज द ग्लोबल सर्च फॉर द कस्टमर जो आपका ऐप रेस्ट्रिक्टेड है. सेटअप में जाके आप जब सर्च मारते हैं, दिस इज योर ग्लोबल बैकएंड सर्च. तो ये आपका एप्लीकेशन में कुछ नहीं सर्च मारता, ये आपका बैकएंड में सब सर्च मारता, राइट? सो दिस इज द ग्लोबल सर्च. सेटअप में आ गए हम, मेन हमारा एप्लीकेशन में आ गया, राइट? नाउ कॉन्फ़िगरेशन हम आप सेटअप से कैसे करेंगे? All of those things, every possible setting you need to do is within this bar. Okay, ये जो आपको लेफ्ट साइड में मेनू दिख रहा है, it contains every possible setting that you need to do. Now I'll do one thing. Okay, I'll go through all the items which I had shared as part of the syllabus, right? मैंने आपको जो करिकुलम में बोला था जो जो चीजें हम कवर करेंगे, राइट? All those things, let's go from here. ऑटोमेशन हम कर रहे थे. लेट्स गो विद द फंडामेंटल. हम लोग डेटा मैनेजमेंट कर रहे थे, राइट? सो व्हाट वी नीडेड, ऐप मैनेज कर रहे थे, राइट? टैब्स मैनेज कर रहे थे, राइट? जस्ट यू सी, ऑल ऐप रिलेटेड सेटिंग्स आर अवेलेबल हियर. लेट्स गो टू automations. Are automations available here? All kinds of different automations are available, right? Let's go to स्ट्रक्चर. जो हमारा डेटा मॉडलिंग है, स्कीमा वगैरह हमको यहाँ पे मिलेगा. ऑब्वियसली स्कीमा बिल्डर हमको मिलेगा, हम स्कीमा बिल्डर स्ट्रक्चर बना सकते हैं, राइट? डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इज इट अवेलेबल हियर? यस. So this left menu is your main menu for all the configurations in Salesforce. Over time, with experience, what you will know है कौन सी चीज कहाँ पे है. आपको फ्लो बनाना है. You will remember जब आपको यह ध्यान आ जाएगा, okay, I just go to process automation, I just go to flows, it is here. आपको कोई नया यूजर बनाना है, okay, you go to users,
inside this there is another sub tab which is the users. यहाँ पे जाके आप यूजर बनाएंगे, राइट? आपको एप्स मैनेज करने हैं, राइट? इट डिपेंड्स ना आपको किस टाइप के एप्स मैनेज करने हैं। आपको सेल्सफोर्स वाला एप्स मैनेज करना है, आप एप्स में जाएंगे, आपका ऐप मैनेजर आ जाएगा, राइट? व्हाटएवर सेटिंग यू नीड इट इज हियर. Over time you will just know कि where to look for it, or you will get very used to using this quick find, जहाँ पे anything you want you just start searching and you identify what you need, right? Till now what I mentioned, is this clear? Yes, sir. Anyone sir. has any doubt? फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, कहां पे मुझे सारी सेटिंग्स मिलेंगी? तो सेटअप में जाके, Right. Now you just have to over time get faster, better at looking it up. Okay, जितना आप सेटिंग्स यूज करेंगे आपको उतना ओवर टाइम एक्सपीरियंस होता रहेगा। अच्छा ये यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे होता है, बट एनीवे विल बी कवरिंग ऑल दोस थिंग्स, बट दिस इज वेयर यू फाइंड दोस थिंग्स. नाउ द नेक्स्ट पार्ट यू नीड टू नो इज, ठीक है, अल्टीमेटली एवरीथिंग वर्क्स विथ डेटा, right? When you have Salesforce, within Salesforce you have to store data. अब डेटा स्टोर नॉर्मली हम कैसे करते हैं? कहीं डेटाबेस बना होता है, डेटाबेस के अंदर हमारी टेबल्स बनी होती है, उसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, राइट? सो व्हाट इज जस्ट टेबल? टेबल इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा. इन Salesforce, that data structure of table is actually called object. For this one thing you have a different tab here, because this is that important, which is object manager. यहाँ पे आप क्या स्टोर करते हैं? योर डेटा. डेटा का टाइप आप यहाँ पे बताएंगे, राइट? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आपका कोई बिजनेस है, राइट? यू सेल समथिंग, आपके पास एक स्टोर है, राइट? सो नॉर्मली व्हाट यू विल हैव, आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स रहेंगे जो आप बेचते हैं, राइट? सो यू नीड वन टेबल जहां पे आप प्रोडक्ट्स रखेंगे, राइट? देन आपके पास प्रोडक्ट्स का प्राइस कहीं पे आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा. यू विल नीड सम टेबल जहां पे आप प्रोडक्ट्स का प्राइस रखेंगे, राइट? अब यहाँ पे आपके जो कस्टमर्स हैं उनके आपको कांटेक्ट डिटेल्स रखने हैं, आप कहीं पे कांटेक्ट रखेंगे उनका, राइट? इवन आप जब कुछ बेच रहे हैं तो व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटा? इट इज अ कोट. यू मे नीड टू स्टोर अ कोट. Okay, sorry. It was the object name. It was not quote. Okay, it is quote, but it is not available in this environment. वो हमको उसमें मिलेगा आपका. कौन सा होता है आपका जो C2P, right? So, sir, one thing I want to ask. yes. सर जैसे आपने को अभी एक टेबल के अंदर आपने जैसे डेमो के लिए बताया कि प्राइस बुक और ये वो कस्टमर का अलग से, तो ये जो अभी आपने एंटर करा था जो रिजल्ट्स आए थे, आर दोस प्री अवेलेबल इनटू दिस? हाँ, that I'll just explain. Right? Fine. So basically you are clear, you guys are clear, right? कि object क्या होता है? Basically it is just a type of table, right? So वो हमको यहाँ पे दिखता है. Now you will see right now, अब इस environment में हमने अभी तक कुछ किया नहीं है. आप सबके environment are also blank environment, अभी तक आपने कुछ किया नहीं है. But अगर आप सब अपने environment में जाके सेटअप में जाके ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाएंगे, you will see all this same object, exact आपको यही ऑब्जेक्ट दिखेगा. Okay, so this is what Salesforce जो बोलते हैं हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल है. Why do we say that? ओवर टाइम Salesforce ने क्या किया है कि अच्छा किसी को अगर सेल्स का बिजनेस चलाना है तो उसको प्रोडक्ट वगैरह रखने ही होते हैं, राइट? किसी का अगर सर्विस का बिजनेस है, कस्टमर कंप्लेंट वगैरह हैंडल करने का बिजनेस है, तो उसको क्या क्या चाहिए होता है?
उसको टास्क चाहिए, उसको ईमेल चाहिए, उसको केस चाहिए, कॉल चाहिए, राइट? ये सब चीजें ही स्टोर करता है, राइट? वो तो ओवर टाइम व्हाट सेल्सफोर्स हैज डन, जिस टाइप का डेटा आर मोर कॉमनली यूज्ड उसके लिए उसी ने ऑब्जेक्ट बना दिए हैं कि ये ज्यादातर हमारे कस्टमर्स को चाहिए होता है, एक काम करते हैं हम ये ऑब्जेक्ट बना के दे देते हैं रेडीमेड आउट ऑफ द बॉक्स। ये ऑब्जेक्ट को बोला जाता है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। इफ यू सी हियर फॉर ऑल ऑफ दीस ऑब्जेक्ट्स द टाइप इज स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। व्हाट डज दिस मीन? ये रेडीमेड ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स की तरफ से बन के आया है कि किसी को कोई कॉन्टैक्ट स्टोर करना है किसी का, राइट? सो कॉन्टैक्ट तो स्टोर करना ही होता है बिजनेस को, राइट? तो उसके अंदर क्या क्या डेटा स्टोर करेगा? देयर आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डेटा, जैसे कि नाम स्टोर करेगा, फोन नंबर स्टोर करेगा, फोन कर सकता है कि नहीं, एड्रेस स्टोर करेगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, राइट? एक कॉन्टैक्ट में ही सब चीजें स्टोर की जाती है। सो दिस इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। अब व्हाई सेल्सफोर्स इज सो पॉपुलर इज it does not restrict you to the standard object, right? For our purposes what we will be building is, let's take an example कि हम लोग एक स्कूल के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, राइट? या एक ऑफिस के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो हम ऑफिस जब बना रहे हैं तो ऑफिस के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमको किसका डेटा स्टोर करना पड़ेगा? एनीवन? एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज का डेटा एम्प्लॉय स्टोर करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज, राइट? डेटा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट्स वगैरह का डेटा मेरे को स्टोर करके रखना पड़ेगा, राइट? क्लाइंट्स का डेटा स्टोर करके रखना पड़ेगा, एचआर का डेटा स्टोर करके रखना पड़ेगा, लोगों का अकाउंट, सैलरी, पैसा, ये सब डेटा स्टोर करके रखना पड़ेगा, ये सब ना, यस यस राइट? सो नाउ दिस इज वेयर द कस्टमाइजेशंस कम इन। व्हाट सेल्सफोर्स टेल्स, ठीक है, आपका कुछ कस्टम रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट्स का डेटा स्टोर करने के लिए आप एक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना है, उसको यूज कर लो, रीयूज कर लो। अब एम्प्लॉइज का डेटा स्टोर करना है, कैसे स्टोर करेंगे? देन वी हैव द ऑप्शन कि हम अपने अकॉर्डिंग भी पूरा डेटाबेस बना सकते हैं। If you want, you can create all new objects as per your requirement and you don't have to use any of these objects. This is just एक standard set दिया है, जरूरत पड़े तो यूज करो, नहीं तो आप अपना बना लो, राइट? सो दैट इज व्हाई आप जो Salesforce का जो डेटाबेस है वो स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली कॉन्फ़िगरेबल थ्रू दिस ऑब्जेक्ट मैनेजर। You can use existing ones or you can create your own object. अब जब आप खुद से बनाते हैं, so that is not a standard object, that is what is called a custom object. Is this clear? कि Salesforce डेटा कैसे स्टोर करता है within objects? Is this concept clear to everyone? यस Right? Fine. Now the next thing we move is, अब डेटा हमने जैसे ऑब्जेक्ट में स्टोर किया, लेट्स से अकाउंट में हमने डेटा स्टोर करना है, राइट? तो अकाउंट इज अवर ऑब्जेक्ट, राइट? अब जब हम वो एप्स बना रहे हैं, जो एप्स हम कस्टमर के यूज करने के लिए बना रहे हैं, तो एप्स में भी तो यही डेटा दिखाएंगे, राइट? ये सुन लो, यस यस राइट? अकाउंट का डेटा स्टोर किया है तो यूआई पे भी अकाउंट का डेटा ही दिखेगा। दैट इज व्हाई लेट्स स्विच बैक टू द एप्स फॉर वंस। लेट्स गो टू द सेल्स ऐप, राइट? विद इन द ऐप, इसीलिए हम जब इफ यू सी अबव, ये क्या क्या है? नथिंग बट द ऑब्जेक्ट्स। सेल्स ऐप के अंदर आप अकाउंट का डेटा देख सकते हैं, जितने अकाउंट है आप देख सकते हैं, राइट? सिमिलरली जितने लीड्स हैं आप देख सकते हैं, रेडीमेड जो डेटा हमारे पास है, राइट? ऑल रिकॉर्ड्स यू कैन सी। सो व्हेन वी से वी आर कंट्रोलिंग ऐप, हम ऐप क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम डायरेक्टली किसी को, एंड यूजर को बैकएंड का एक्सेस तो नहीं देख सकते, फिर उसको तो सब डेटा दिख जाएगा और वो डेटा मॉडिफाई भी कर सकता है, वो डेटाबेस ही मॉडिफाई कर देगा। विच इज वाई वी नीड टू क्रिएट दिस एप्स, कि हमारा जो कस्टमर है वो एप्स यूज करेगा, जो हम उसको दिखाना चाहते हैं उसे खाली वही दिखे। दैट इन्वॉल्व्स द फर्स्ट स्टेप which I mentioned to you was data management.
which is आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सेल्स में कितने टाइप के एप्स आपको दिख रहे हैं? How many apps are visible in the Salesforce? I think 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, at least 11, 12, 13, whatever it is, right? And we can modify this. We can add more objects here. कि मुझे चाहिए सेल्स में और भी डेटा दिखाना है मेरे को, right? But I don't want this data to be visible in service app. Okay, सर्विस ऐप में मेरे को कम डेटा दिखाना है. I'll only show जो डेटा मेरे को चाहिए on the service app. UI हम चेंज कर सकते हैं, right? So this is the relation between the back end and the front end. Back end में जब आप as an admin login करते हो, as a developer login करते हो, you get access to modify anything. Front end में you control कि client को क्या दिखाना है, right? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Anyone, any doubt regarding why we have all objects and how we control access to objects? No, One sir. second. Sir, one thing I want to ask. Hello. Yeah, am I audible? Yes, sir. Yes. Yeah, fine. Yeah, someone was asking a question. Sorry. जी सर. सर ये जो ऐप लॉन्चर में से जो सा भी ऐप हम सिलेक्ट करते हैं तो वो ओपन हो जाता है, तो उसके ऊपर आपने जो एक ग्लोबल सर्च बताया था, हाँ, ये ग्लोबल सर्च जो है इट सर्च इन दैट स्पेसिफिक ऐप जो हमने ओपन कर रखा है और विद इन ऑल द एप्स. on the front end. आपको front end में अब now we will move on to the next thing which is called the access, right? How we control access of a person. Okay, there that is also with something comes into the picture. But what I meant to say is कि जो आप ऐप के अंदर सर्च कर सकते हो is something which is your front end search. Okay, there are things जो आपको back end में सर्च करने पे मिलेगी जो आपको front end पे सर्च करने पे नहीं मिलेगी. ओके. Okay. ओके. There are configuration rules settings जो आपको backend से मिलेंगी, वो आप ऐप के अंदर से नहीं सर्च कर सकते. Let me try this one. I think this will also not work, right? Yeah. If you see here, right? Now यहाँ पे आप देखिए जब ऐप के अंदर का सर्च है, what is it searching within? When I select all, it means all of these. But यहाँ पे क्या है यार देखिए, these are all just object के records, right? If you see here, these are all object records, right? Now let's say there is अब user का हम जब access control करते हैं, we control using something called profile. Okay, let me search for a profile. Now see here. Okay, hold on. What is the profile name? I think it's just essay, standard user. It is system. Why did this not come? No worries, must be some issue with this. Let's search for this. Let's search for an app only. अब आप देखिए support force जो मैं यहाँ से सर्च कर रहा हूँ, what is this? This by itself is an app. ये देखो अभी system administrator यहाँ पे आ गया. Must have been some issue. But this is a profile. Profile is something which we use as a configuration to control access. But in the front end, app के अंदर से can you search for profiles? No. You can only search for records of objects. Okay. तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके रिकॉर्ड्स को ही आप सर्च कर सकते हैं. यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशंस को नहीं सर्च कर सकते जो बैकएंड में है. सो दैट इज द डिफरेंस. इट्स नॉट लाइक खाली इस ऐप के अंदर है कि नहीं. ओके, इट्स जस्ट कि आपका वो फ्रंट एंड का पार्ट है या वो सेटअप की कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है. अगर वो सेटअप की कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है तो वो आप यहां से सर्च मारेंगे.
But if it's just data, records, and those things, तो आप यहाँ से search करो. Is that clear? Does that answer your question? Yes. Fine. Right. Now, as I told you, कि अब यहाँ पे हम लोग, this is your setup. Right. अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे records दिखा रहे हैं. तो based on app हम access control करते हैं. Sorry. Right. कि कौन सा ऑब्जेक्ट दिखाना है, कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं दिखाना है. All those things based on app we control. Now, object, ये सब की टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी पड़ेगी. What is called what? Some common things you have to be very clear, right? अब जब ऑब्जेक्ट के अंदर हम जा रहे हैं, तब ऑब्जेक्ट का एक स्ट्रक्चर होगा, राइट? लेट्स गो टू अकाउंट, राइट? अकाउंट के अंदर क्या क्या रहेगा? अकाउंट का कुछ नाम रहेगा, राइट? नंबर रहेगा, आईडी रहेगी कुछ, और भी कुछ जो भी डेटा हमको रखना, फोन नंबर वगैरह, जो भी वट एवर वी नीड, राइट? दैट इज व्हाट वी स्टोर हियर. सो एवरी कॉलम, थिंक ऑफ इट लाइक दिस. अगर आपका टेबल है अकाउंट, राइट, तो उसका हर एक कॉलम जो है वो होगा फील्ड्स. ओके, if your database table is called an object, then every column of that is called a field. तो account object का हर एक field क्या है? Right, let's go to a record. Let's go to this one. तो आप देखेंगे अकाउंट का एक ओनर है, अकाउंट का रेटिंग है, फोन नंबर है, फैक्स नंबर है, वेबसाइट है, अकाउंट नंबर है, टाइप है, राइट? सो अकाउंट इज द ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ दीज आर फील्ड्स, राइट? एड्रेस क्या होगा, डेट क्या होगा, ना सीरियल नंबर क्या होगा, राइट? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ फील्ड. नाउ अब फील्ड इज जस्ट ओके, डेटा रहा, बट देयर इज वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ फील्ड जिसको नॉर्मली हम अलग से ट्रीट करते हैं, which is called relation, right? Relation नेम से ही आपको थोड़ा एक वो आ जाना चाहिए कि बाय इटसेल्फ रिलेशन जस्ट मींस कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर रहे हैं, okay, that is called a relation. Which is why if you see here, the heading is not just fields, it is fields and relationship. Now let's check how it differentiates, right? Account number is a field which is a text. Okay, these text, pick list, currency, address, all of these are fields, right? But if you see, there is some specific types which is lookup, right? There is another type which is master detail, right? ये आपका lookup रहा. Let me go to some object जिसमें master detail भी रहे, right? I think what will have a master detail? Order product will have a master detail. No, it's not here. Fine, no worries. We'll create a master detail when we work with this. But ये आपका जो डेटा टाइप दिख रहा है, दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक. जो कुछ स्टैंडर्ड आपके डेटा टाइप होते हैं, नंबर होगा, कैरेक्टर होगा, स्ट्रिंग होगा, राइट, करेंसी होगा, डेट होगा. अदर देन दैट इफ यू सी, देयर इज द स्पेसिफिक टाइप व्हिच इज लुकअप. लुकअप के साथ ही आप देखेंगे देयर इज समथिंग व्हिच इज द ऑब्जेक्ट नेम, राइट? सो दिस इज नॉट अ फील्ड, दिस इज अ रिलेशनशिप. Relationship between what? Between two different objects. What are the objects? Order product मेरा object है. यहाँ पे मेरा एक relationship है to what? To order, to a user, to a product, and also to another order product. This is also possible. Okay. So field is my normal data types, and relationship means जब मैं किसी एक object को दूसरे object के साथ link कर रहा हूँ. Now within relationships there are subtypes which we will go into further detail later. But you just need to understand, okay, जब हम object बोल रहे हैं हम क्या mean कर रहे हैं, जब हम fields बोल रहे हैं what are we meaning, when we say relationship what are we meaning. Any doubts regarding these three key terms, objects, fields and relationships? सर आपने बोला था कि जैसे डेटा टाइप के अंदर जैसे लुकअप लिखा हुआ है तो दैट इज
basically little different than what basic data No, types yeah, that we are aware of. right. Yeah, so So देखो that एक there is a basic data type which is just वो type से ही आपको पता चल जाएगा that is just a type जो खुद से डेटा है. नंबर, व्हेन आई से नंबर, तो उसके अंदर क्या होगा? इट कैन नॉट बी सम डिफरेंट ऑब्जेक्ट, उसके अंदर कोई नंबर ही रहेगा. राइट. right. These are different because why we can clearly identify these are relationships, because you can see these are tagging a other type of object or this same object. This is not a data type, this is an object. Right. Okay, जो ब्रैकेट में है सर. Right. So Okay. number is not an object. Right. User is an object. Order is an object. Order product is an object. Product is also Right. an object. Right. So relationship kahan se aata hai? When relationship by itself is also field, but you don't use it to store data. You use it to store a link to another object. तब वो relationship बन जाता है. Okay. मतलब सर इन सिंपल लैंग्वेज जैसे डेटाबेस की जैसे हम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं तो इट इज लाइक जॉइंस इन डेटाबेसेस. No. Relationship is like foreign key. फॉरेन की. ओके. ओके सर. Okay. सर Relationship एक यहाँ पे table. हाँ. सॉरी नहीं, यहाँ पे रिलेशनशिप हम मतलब ये फील्ड लेबल, यहाँ पे रिलेशनशिप कौन सा है? ये वाले जो अभी विंडो आप शेयर कर रहे हो, यहाँ पे हम इस विंडो रिलेशनशिप. look at this. मैंने आपको क्या बोला? Relationship means it is linking with the object. Right. या तो यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या लिंक कर रहा है? दिस यूजर इज एन ऑब्जेक्ट. ओके. ओके. आप देखिए फील्ड देख के आप समझिए, दिस इज क्रिएटेड बाय, मतलब यस. ये ऑर्डर प्रोडक्ट इसने बनाया था, तो जो बनाया होगा दैट इज अ यूजर. उसका डेटा स्टोर करने के लिए भी एक ऑब्जेक्ट है विच इज द यूजर टेबल. ओके. तो दिस इज अ रिलेशन टू दैट यूजर ऑब्जेक्ट. सिमिलरली ओके, लेट मी गो टू दिस अकाउंट. ओके, अब देखिए. ओके, लेट्स गो टू अकाउंट, दैट विल हेल्प. Let's go to this field. Account के अंदर, if you see, there is a relationship which is the account owner. Okay. Account owner. This is a lookup to user. Right? What does this mean? ये एक account है. This is a एक object का data है. ये account owner, when I see relationship, if I click to it, if it switches to a different object, which is people. People is backend में, user is frontend में people. Okay. So it shows okay, ये एक दूसरा record खुल गया. Let's go to contacts. राइट. तो कॉन्टैक्ट एक ऑब्जेक्ट है. अब ये वाला कॉन्टैक्ट के अंदर अकाउंट नेम एक रिलेशनशिप फील्ड है. इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए आप अकाउंट खुल गया. राइट. सो रिलेशनशिप मतलब आपका किसी ऑब्जेक्ट से किसी ऑब्जेक्ट के बीच का जब आप लिंक बना रहे हो यूजिंग अ फील्ड, दैट फील्ड इज कॉल्ड अ रिलेशन. Do not worry this much. Relationship में भी सब types है. Relationship is something we will have to study in much more details. But I just want you to understand, when we mean just field, it is just a like normal data है. नाम लिखना है, नंबर लिखना है कुछ, right? बड़ा नंबर लिखना है, छोटा नंबर लिखना है, अमाउंट लिखना है, right? That is a data type. But relationship का मतलब है it will not be a data type. वहां पे हम किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर देंगे उसको. Okay? ओके सर. बिकॉज ये टर्म्स आपको हर जगह याद करनी पड़ेगी. जब हम कंपोनेंट बना रहे हैं, कैसे हम रिलेशनशिप्स क्वेरी करेंगे, कोड लिख रहे हैं, कैसे हम रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स अपडेट करेंगे. सो व्हाट डू वी मीन? वी विल बी वर्किंग विद दीस थिंग्स. इसलिए ये कॉमन टर्म्स आपको याद होना चाहिए. यू शुड नेवर बी कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट दीस टर्म्स मीन्स. ओके. एनीवन एल्स? एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? फाइन. अब हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट. हमारा क्या हुआ फिर? लेट्स गो विद दैट एनालॉजी जो फॉरेन की वाला किया था. लेट्स टेक, अगर डेटाबेस में मेरा ऑब्जेक्ट है मेरा टेबल, राइट? सो ऑल ऑफ दीज फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स आर कॉलम्स, राइट? तो स्पेसिफिक जो डेटा है, हर रो का एक डेटा है. सपोज लेट्स टेक एम्प्लॉय, राइट? तो एम्प्लॉय अगर मेरा टेबल हुआ तो दैट विल मीन माय ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट? एम्प्लॉय.
एम्प्लॉय के लिए कुछ फील्ड्स आप सजेस्ट कर सकते हैं? एनीवन? एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डोमेन, राइट, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, राइट। और एम्प्लॉय के लिए सब फील्ड्स रहेगा। तो जब मैं कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड बोलता हूँ, राइट, किसी एक एम्प्लॉय का डेटा, उस एम्प्लॉय का डेटा में क्या रहेगा? एम्प्लॉय नेम में रहेगा टेस्ट एबीसी, एम्प्लॉय आईडी रहेगा 1 2 3 4 5, डेजिग्नेशन रहेगा सेल्सफोर्स डेवलपर, राइट, एड्रेस रहेगा लेट से बैंगलोर, राइट, कंपनी नेम रहेगा कि इस कंपनी में काम करता है, इस डिपार्टमेंट में काम करता है। So that specific row, what is that specific row called in Salesforce? That specific row in Salesforce called a record. Okay, so जब मैं ये अकाउंट में जा रहा हूं, ऑल अकाउंट्स की लिस्ट कर रहा हूं, so what is this list? Every one of this is one record of account. Okay, हर एक record is one row of that account table. So this Burlington Textile Corps of America, ये एक specific record है। इसके अंदर हम जाएंगे, क्या क्या मिलेगा? इसके लिए हर स्पेसिफिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली जब हम कॉन्टैक्ट में जाते हैं, तो इफ सी लेट्स से रोज गोंजालेस, व्हाट इज दिस? दिस इज वन रिकॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो हर रिकॉर्ड के अंदर जाके उसके स्पेसिफिक फील्ड्स का हमको वैल्यूज मिलेगा, राइट? What is happening? VPN get disconnected, but I find that. Right, so you see, right, every specific field हम जाके मॉडिफाई कर सकते हैं, whatever you want to add, assistant, phone number, reports to mailing city, other city, country, description, right? So this specific thing is called a record. Everyone clear सर with ये जो what it is? सर ये जो लेआउट के अंदर हाँ, आ रखा है, ये सारा डिपार्टमेंट, बर्थ डेट, रिपोर्ट टू, जो हम कॉन्टेक्ट्स पे, कॉन्टेक्ट जो ऊपर बार बना हुआ है उसमें कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट वाले उस पे जाते हैं, तो ये एक वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टली अलाइंड आता है, मतलब ये सारा लेआउट एक रिकॉर्ड बन जाता है उस टेबल का। नहीं, ये पेज पे दिख रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी एज अ रिकॉर्ड है। ओके, इफ आई गो हियर टू कॉन्टैक्ट, राइट, तो यहाँ पे ये जो 20 दिख रहे हैं, दीज आर ऑलरेडी क्रिएटेड रिकॉर्ड्स। लेट्स से आई गो टू न्यू, राइट, अब ये मेरे पास एक फॉर्म खुला। नाउ आई विल ऐड ऑल द डेटा एंड आई विल सेव, तब जाके एक नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा, ओके, विच विल गेट एडेड हियर। अब एक बार एक रिकॉर्ड जब क्रिएट हो जाता है, सो दीज आर दैट मींस ऑलरेडी क्रिएटेड रिकॉर्ड्स, यहां से मैं नया रिकॉर्ड भी बना सकता हूं। अब ऑलरेडी क्रिएटेड रिकॉर्ड्स हैं, तो देयर इज नथिंग टू से कि आप पुराने रिकॉर्ड मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आइडियल, राइट? सो व्हेन आई एम मॉडिफाइंग हियर, आई एम मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, ओके, ओके, राइट। Anyone else records? Any queries? No, sir. Fine. Now, the next most important thing the records is called the record ID. Okay. Let me show it to you. Give me 1 second. Can someone please mute yourself? Yes, sir.
Right. I'm audible? Yes, sir. Yes, sir. Fine. So now record तो हमने आपको बता दिया. Now there is one field which is, I can confidently say, one of the most important fields in Salesforce. Right? Why? Because that is the field you use to uniquely identify a record. जब ये database के अंदर है, so there will be some data जो can be matching, right? You can have two people with the same name of Rose Gonzalez, right? So what is that unique field? And there is a one place you can easily find that unique field, right? That is here at the top. And इसको बोलते हैं ID. यहाँ पे अगर आप देखेंगे, right? If you look for it here, let's search. We are in the account table, right? It is not showing here, right? Why it is not showing here? Because it is not a field that a user can modify, can update, or can change. That is why from here it is completely hidden. लेकिन जब हम बैकएंड में जब हम लोग कोड लिखेंगे, ऑटोमेशन लिखेंगे, एपेक्स लिखेंगे, LWC लिखेंगे, we will be extensively using this field ID. क्वेरी लिखेंगे with this ID. Why? ID से ही आप uniquely आप records identify कर सकते हो. You know, it is the only field which is guaranteed to be unique. How it is guaranteed to be unique? Let me open two different accounts. Okay. So I open two different accounts here. जब भी कोई नया record create होता है, Salesforce creates a 18-digit ID for that, which is called the record ID. If you see at the top here, within the URL, you can find this ID very easily. इस domain के अंदर, account के अंदर ये वाले record को आप view कर रहे हो. This is the ID of an account. Okay. This is the ID for this account. And this will always be unique. So ID is what you use. इस ID को आप कोड में लिखो, LWC में लिखो, फ्लो में लिखो, वो हर जगह आपको ये वाला अकाउंट रिटर्न करके दे देगा. Okay, so this ID is the most important field you should know. Is this clear? What is ID? What are possible use cases of ID? Yes, sir. Fine. Now, we have covered most of the basic terms and the most crucial terms जो हमारे Salesforce के लिए applicable है. Now, ये तो चलो Salesforce से यहाँ से कर लिया. Automation हम बनाएंगे, ये सब हम यहाँ से बना लेंगे, right? Configuration हम यहाँ से करेंगे, users बनाने हैं हम यहाँ से बनाएंगे. All those things will be doing from here. Code अगर आपको लिखना है, तो आप कहाँ से लिखेंगे? Now, Salesforce by itself is an old platform जहाँ पे पहले Visual Force होता था, Aura था, अभी LWC है. So it has always had its own development portal also, जहाँ पे आप कोड कर सकते हैं within the Salesforce org. वो आपको कहाँ पे मिलता है? Within setup, there is something which is called a developer console, right? So इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल जाता है, which shows okay. यहाँ पे आप नया एपेक्स क्लास बना सकते हैं, VF पेज बना सकते हैं, लाइटनिंग एप्लीकेशन, लाइटनिंग कंपोनेंट बना सकते हैं. ठीक है. LWC लेकिन आप यहाँ पे नहीं बना सकते, because this is not something Salesforce has also updated since LWC came. बट पुराना टाइप का कोई भी कोड आपको लिखना है, आप डेवलपर कंसोल पे लिख सकते हैं, या फिर क्विकली कुछ डिबग करना है, चेक करना है, ये सब चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं. There are a lot of things which we still use developer console for, but other than that, the recommended practice is जब आप कोड लिख रहे हैं, you should have VS Code. Okay. Why did it open here like this? How do I bring this now? Ideal logic should be you should have VS Code. This is the standard recommended
IDE जो Salesforce करता है. Previously जब force.com था, we could also run with Eclipse था, एक कुछ ए से कुछ नाम था, aside.io या कुछ था, right? So there were multiple IDEs which were previously supported, but now the recommendation is to use Visual Studio Code. तो हम लोग भी कोड विजुअल स्टूडियो में ही करेंगे, because that is what is recommended. That is the best, most configured, best, extensions, all those things are set up for Salesforce development. For code development, you need to be better with Visual Studio Code. तो उसको भी हमको सीखना पड़ेगा, right? So overall जो Salesforce का structure है, कहाँ पे major चीजें क्या क्या करनी है, is everyone clear after today's session? Yes, sir. Anyone has any queries? ये विजुअल कोड जो है उसको सेपरेटली Sorry? करना पड़ेगा. Can you be a bit louder? विजुअल कोड जो है उसे सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ेगा या इट इज देयर इन Salesforce already? No, Visual Studio Code you will have to install. Let me do one thing. I'll share you guys the link, at least the latest link for VS Code. आप लोग वहां से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. Just do one thing. Just do a basic install. Okay, do not do any of the configuration customization जो वो खुद से recommend करता है, right? Just install and keep it. For Salesforce, there are specific extensions, packages configure करने पड़ते हैं, which I'll provide you a detailed list of the steps to be done. And it would be better if we do those steps in call once so that everyone can walk through parallelly, and then we can go through this, right? For now, if you want, just आप लोग Visual Studio Code इस लिंक से डाउनलोड करके रख सकते हैं. And it is a pretty lightweight IDE, तो इतना कुछ है नहीं. Visual Studio is not very heavyweight कि आपका RAM वगैरह ये सब चीजों पे impact करता है. It runs on any computer, right? Right, sir. And what is this Aura components? Yeah, so Aura component was before LWC. Aura components used to be work. Okay. तो अब Aura का upgraded version फिर बाद में LWC आया. The reason is, see, I'll tell you why this happened. जब Visual Force आया तो Visual Force was more in line with Salesforce Classic के साथ कैसे integrate करना है. Then people were like, नहीं, we want और HTML का functionality चाहिए, compatibility चाहिए, right? Newer browser version के साथ चले, latest JavaScript के साथ चले. So then we came up with Aura. Now, but with Aura का क्या issue था? Aura के अंदर हम लोग JavaScript तो use करते हैं, लेकिन जो UI का part है उसके लिए you specifically write Aura code, which is somewhat similar to HTML और XML का combination मिला के बना है, right? So अब वो use करते हैं, Aura का करते थे, but then the thing became was कि why not make it completely uniform? एक आज अगर कोई वेब डेवलपर आके भी Salesforce में UI बनाना चाहता है, he should be able to make it the industry standard, make it easy to translate, make it more lightweight. So then people were like, okay, ultimately देखो UI पे जब चलता है, it runs in HTML only. तो जब आप कोई भी different अलग जो UI बनाते हैं, that also gets converted, compiled into HTML, and then it runs. So then they were like, okay, let's create an updated version. They created LWC. There were a lot of new benefits, lot of new functionality added. Along with that, they made it directly integratable with HTML and JavaScript. Okay, so these are just upgrades over time will happen. अब ड्यू टू दिस आज के तारीख में डिमांड किस चीज का है? LWC आपको आना चाहिए. बट अब LWC आपको आना चाहिए, यू मे एंड अप विद अ प्रोजेक्ट जहां पे जाके आप देखेंगे कि नहीं, अभी भी कुछ कोड है जो Aura में है, जो चलता है, वहां पे कुछ डिफेक्ट आया और आपको फिक्स करने को दिया. You should have some idea of what is Aura, right? So we will just cover the basic of that, but the demand of the day is you should know LWC. I would say people who have there are a lot of majority of people who have become Salesforce developer in the last 3.5 years. I would say unless unke project mein hai, most people are not that aware with Aura. Anyone before 3.5 years should be pretty confident about Aura. So that is the expectation, which is why for you guys, Aura is not a essential requirement, but it's more like a good to know. कि पता होना चाहिए चीज क्या है.
right? Does that answer your question? Yes, sir, absolutely. Fine. Right. Anyone else? Any queries? Any questions? सर रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड होती हैं? हाँ, ये सारे सेशंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, राइट? तो ये सारे सेशंस आई थिंक शेयर पॉइंट पे कहीं पे ऑटोमेटिकली स्टोर होते हैं. सो आई थिंक कुणाल विल शेयर यू द लिंक ऑफ दैट पोर्टल जहाँ पे सारे वो हो रहे हैं. I think you have to set up that access or something. So daily classes, every class session will be recorded. You will have a recording of all the class sessions. Okay. ओके थैंक यू. Right. Anyone else? Sir, one doubt actually. Maybe मुझको screen share करके I'll be in a better position to explain you what I actually want to ask. So may I? Okay. Yes. Okay. Are you able to see it, sir? No. Okay. Now? Okay. I think it's loading. Yeah, we can see your screen, but it's very big. Now are you able to see my Teams का window दिख रहा this, है. Teams का window दिख रहा है, but blurred है. blurred है. अरे blurred तो मुझे वो ठीक करना नहीं आता है. But we are still seeing the Teams window. We are not showing your browser. ठीक है सर, मैं आपको बताता हूँ मेरा डाउट क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐप लॉन्चर से सर्विस उसके अंदर गया, मैं ऐप के अंदर गया. हाँ. ठीक है. उसके बाद मैंने जैसे आप हमको दिखा रहे थे अकाउंट्स, आपने ऑब्जेक्ट खोला, उसके बाद आपने लिस्ट व्यू से ऑल अकाउंट्स खोल लिए. उसके बाद वहां पे डिफरेंट कॉलम्स आ रहे थे जो कि फील्ड्स थी. अकाउंट नेम, अकाउंट साइड, बिलिंग, फोन टाइप एंड अकाउंट ओनर एलियास. ठीक है. तो ये 5-6 फील्ड्स आ रही थी टोटल करके. तो हमने फर्स्ट अकाउंट नेम पे जाके जो कि था बर्लिंगटन टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका, उसको क्लिक कर लिया एंड देन उसके डिटेल पेज पे गए. तो वहां पे जो टोटल उस अकाउंट की फील्ड्स आ रही हैं वो इज समवेयर नियर अबाउट 15-16. हाँ. तो ये सारी की सारी फील्ड्स हमको अकाउंट वाले टैब पे डायरेक्टली क्यों नहीं दिख रही थी इस स्पेसिफिक अकाउंट के लिए? वहां पे सिर्फ 5-6 फील्ड्स क्यों दिख रही थी? नहीं, because see that is a let me tell you something. ठीक है. तुम्हारी जो let's say तुम्हारी जो 10th की मार्कशीट है, right? जी. So that has name, class, session, date of birth, subject wise marks, grade, 10th grade, सब combined है, right? जी. Right. But जब रिजल्ट आया था, जब रिजल्ट की लिस्ट लगी थी, right? Say what is your total percentage, right? तो वहां पे क्या लिखा हुआ था? रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास, right? ठीक है सर. That exact thing is what is happening here. You have to look at it this way. जब आप all accounts में जा रहे हैं, that is something called a list view. Okay, a summary. Okay. यहाँ पे मेरे को बस पूरे ठीक है सारे अकाउंट का डेटा देखना है, एक समरी डेटा देखना. बट आई डोंट वांट ऑल द डेटा देयर. वो जो आप 5 फील्ड्स देख रहे हैं, वी कैन रिड्यूस इट टू जस्ट 1 फील्ड, खाली नाम दिखेगा, और वी कैन इंक्रीज इट टू आई थिंक मैक्सिमम 10 फील्ड्स. कि अब 10 फील्ड्स में आप चूज कर सकते हैं. जो अभी है उनको कंप्लीटली हटा के कोई और फील्ड्स भी दिखा सकते हैं. सो दैट लिस्ट व्यू इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड अ समरी व्यू. जो आपका जैसे मार्कशीट के उसमें मैंने बोला, राइट, एग्जांपल में, कि ये बस एक लिस्ट देखना है आपको, आपका रैंक कितना है, दैट इज ऑल, राइट. ओके सर. रिकॉर्ड के अंदर जब जा रहे हैं तब जाके आपको रिकॉर्ड का पूरा डिटेल चाहिए, तब आपको डिटेल्ड मार्कशीट चाहिए, भाई कौन सा सब्जेक्ट में क्या आया, राइट. सो दैट इज रिकॉर्ड डिपेंडेंट डेटा. सब कुछ समरी पे हमको नहीं दिखाना. सो दैट लिस्ट व्यू इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड अ समरी व्यू. एंड रिकॉर्ड पे जाके तो आपको सारी फील्ड्स दिखेगी. अब देयर इज अ ट्रिक टू दिस. वो लिस्ट व्यू अक्रॉस एप्स, अक्रॉस यूजर कैन चेंज.
मेरे को कुछ और 5 फील्ड दिखेंगे, आपको कुछ और 5 फील्ड दिखेगी. दैट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड, राइट. सिमिलरली इट्स नॉट लाइक रिकॉर्ड पे ओपन करके भी हमको सेम दिखेगा, राइट. दैट इज द डेटा मैनेजमेंट, यूजर प्रोफाइल, परमिशन सेट, फील्ड का एक्सेस, राइट. कि आपको वही पेज खोल के सेल्स ऐप में जाके वही पेज खोल के आपको 15 फील्ड दिखेंगी, मे बी मेरे को 22 दिखे, किसी और को 10 फील्ड दिखेगी. दैट इज ऑल्सो कॉन्फ़िगरेबल. ओके, राइट. मतलब वो Okay. कॉन्फ़िगरेबल पार्ट है, वो डिपेंड करेगा Right. यूजर टू यूजर किसको क्या दिखाना है. हाँ, इसको और क्या वो दिखाना जो है, बट एज एन ओवरऑल आइडिया वो वो ऑल समरी पेज अकाउंट्स, निकलता है. my accounts, that is something which is called a list view, and उसका पर्पस is to be a summary page कि आप पूरा टोटल डेटा दिखा रहे हैं कि जो जो क्रूशियल चीजें हैं उनके साथ, राइट. मेन चीज राइट देखने सर. के लिए आप रिकॉर्ड हो जाइए, आपको सारा डेटा दिखेगा. ओके, सो दैट इज द ठीक. अप्रोच दैट इज बिल्ट. ओके सर. Do not worry, we will be creating, modifying list views, we will be modifying the layout. Even जो record पे जाके जो आपको जो fields दिख रही है 15 फील्ड 25 फील्ड दिख रही है, right, that is called the layout, the page का layout. उसको भी हम modify कर सकते हैं, right. We ओके can सर. make some of those things read only, कुछ को editable रखेंगे, कुछ को right side में रख देंगे, left side में रख देंगे. So all these things are customizable. Slowly we'll go through these things and all these doubts will clear. But when we are covering these things, still any doubts कुछ रहता है, please make sure to ask those doubts whenever they come. Okay. राइट सर. And this is applicable for everyone. Do not think कि ये बाद में पढ़ाएंगे तो अभी नहीं पूछ सकते. आप पहले पूछिए, कंफर्म कीजिए. Maybe I have missed some small thing. Maybe कोई एक specific point में बोलना भूल गया. Right. I may not have just explained one specific scenario. So you ask that question. Two things will happen. Either I'll explain you then, or if I'm planning to explain it later with something else, at least I'll inform you. You will know. Right. But do not hesitate to ask. No one at all points. कभी भी आपको कुछ डाउट लगे, please ask. I want you guys to bring question. I see my purpose is क्लास के शुरू में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होने चाहिए कि कल क्या किया, हमने ट्राई किया, ये हुआ, ये हुआ, यू, राइट. दैट इज द प्रूफ टू मी कि हाँ आपने किया. एंड क्लास के एंड में भी क्वेश्चन होना चाहिए कि ठीक है ये हुआ, ये हुआ. व्हाट डज दैट मीन? क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि यू हैव नॉट अंडरस्टूड ऑलवेज. क्वेश्चन जब पूछ रहे हैं, इट आल्सो मींस कि थॉट प्रोसेस जो था आपका, राइट, वो प्रोसेसिंग यूज केस क्या हो सकता है, यू हैव थॉट अबाउट दैट. इसीलिए आपके पास क्वेश्चन जनरेट हुआ है ना कि अच्छा मैं अगर ऐसे करूंगा तो क्या हो. I notice these are the beginning session. Some people may not yet be comfortable asking questions, discussing in the public forum, but I want to say, please everyone, आप क्वेश्चन पूछने से कोई मत हिचकिए, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट. Okay, am I clear to everyone? यस. Yes. यस सर. Great. Fine. Thank you everyone. Then I think for today we will take a stop today. The overall summary, I think we are good with this. You should go through with this recording. Once Kunal shares you the link, आप इसको जाके पूरा cover कर लीजिए कैसे क्या हो रहा है, right? Take a better understanding. And from tomorrow, we will be starting on objects. Okay, that is the first thing we need to do. What is an object, right? So from tomorrow हम लोग डेटा पे काम करेंगे. डेटा हो जाएगा उसके बाद I have already shared the curriculum. I think for people who may have joined just today, what I'll do is I'll send it once more in the chat. आप लोग please Teams के chat से आप उसको copy कर लीजिए. Okay. Great. I think that is all for today then. Thank you everyone. Let's connect again tomorrow and we'll begin with objects tomorrow. We'll stop the recording. थैंक यू सर. Thank you. Good night everyone. Good night, sir.